Hello everyone, welcome to Commodities Podcast. This is Rakesh Khanna from Mirae Asset Sharekhan. Today we have an update on aluminium. Aluminium price is in strong downtrend characterized by lower highs, lower lows along with downward trendline breakdown effectively illustrates bearish sentiment in the market. The breach of a crucial support level like Rs 257 for base metal can indeed signify a strong bearish trend. However, if the price sustained below Rs 257 level could trigger further declines with the next target at Rs 250, that is 100-day exponential moving average, and Rs 242, that is 200-day exponential moving average level in near term. The important resistance is identified at Rs 262 level, that is 20-day exponential moving average. The MACD indicator has given negative crossover, supports the bearish momentum in upcoming trading sessions. Thank you. नमस्ते, मैं राकेश खन्ना मिराए एसेट शेरखान की तरफ से आप सबका कमोडिटी पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। आज जिस कमोडिटी की जानकारी देने जा रहा हूँ वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम प्राइस लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन और ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के साथ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, जिससे ये पता लगता है कि ट्रेंड बेरिश है। एल्यूमिनियम प्राइस ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट Rs 257 लेवल को ब्रेक कर दिया है और अगर प्राइस इसके नीचे सस्टेन रहता है तो नीचे में Rs 250 जो कि 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और Rs 242 जो कि 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का टारगेट देखा जा सकता है। ऊपर में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस Rs 262 लेवल पर है जो कि 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। MACD इंडिकेटर ने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है जो कि बेरिश मोमेंटम को सपोर्ट करता है। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.